Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my presentation topic is research paper summary on application of automated instrument. So first of all हम लोग इसका देखेंगे introduction. According to a recent report, the cost of crimes against individuals and households during the period of 2003 to 2004 amount 32 billion pounds in UK only. The same report suggests that if the processing time could be reduced by 2 days, an estimated 23 million pounds could be saved for all sexual assault cases. These striking numbers clearly demonstrate the need to increase the efficiency while decreasing the cost of DNA testing because of the higher throughput and the ability of handle small amounts of fluid. Lab on a cheap approaches can improve the efficiency of DNA testing in crime solving too. The STR method provides enough variation to distinguish between individuals with a high level of confidence and the loci are located in non-coding neutron regions of the genome to avoid ethical concern. Over the past decade, multiple reports of devices assisting DNA analysis from sample collecting crime scenes have been published. ठीक है, ये था हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन के जो ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट है उसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है किसके लिए, जो क्राइम सीन्स हैं उनको सोल्व करने के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियल्स एंड मेथड्स. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स. द मेन बोर्ड कंट्रोलर सपोर्ट्स कम्युनिकेशन between the host computer using RS-232 and the rest of the system using RS-284. Both the sample preparation and the high voltage power supply. Boards are slaves to the main board and transmit only when responding to a command from the master. The SPPCR board controller supports on cartridge DNA structure amplification by PCR and transfer of the purified amplified DNA to the micro device by controlling the current applied to the electrochemical pumps and the thermal actuation of the single-use valves, the temperature of incubation chamber, the movement of magnet and the RS-485 communications with the main board. The microcontroller of the high voltage power supply board operates the CE chip heater, 3 high voltage converters and 4 relays and RS-485 communication with the main board. ठीक है, ये सारी की सारी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं ड्यूरिंग DNA टेस्टिंग. नेक्स्ट है हमारे पास रिजल्टेंट डिस्कशन. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है पेटा एयर टेम्परेचर ट्रैकिंग ड्यूरिंग PCR. द वैल्यूएशन ऑफ द टेम्परेचर ट्रैकिंग बाय द पाल्टर्स फॉर द फर्स्ट एंड 26 cycle of typical PCR application experiment while the chamber is filled with the reagent is for the temperature transition of highest magnitude. The Peltri assembly reaches within 1 degree centigrade of the target temperature in 24 seconds on average when heating and in 10 seconds on average when cooling assisted by 12 volt DC fans. ठीक है, ये सारी कैटेगरीज हमें बताई गई हैं कि जो टेम्परेचर है वो किस तरह से PCR के अंदर मैनेज किया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोमेटिक DNA सैंपल रन. किस तरह से जो ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट है DNA सैंपल को रन करवाते हैं. सेल्स फ्रॉम अ बकल स्वैप सैंपल वर रियलाइज्ड एंड इंसर्टेड इन द माइक्रोफ्लूइड्स कार्टिलेज preloaded with all required reagents such as elution buffers, magnitude DNA captured beads, agarose beads containing primers and polymerase for the PCR processes and other chips, and the internal lane standard mixed with the formite in a 10:1. The LabVIEW based program loads predefined protocol containing the sequence and timings of the controlled microfluids elements detailed earlier performed DNA extraction, purification and the amplification before transferring the PCR product to the CE microchip where another protocol file containing parameters for the electrokinetic injection and migration as well as for the CCD acquisition is exhausted. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंक्लूडिंग मार्क. इसका ओवरऑल जो हमारे पास है इस रिसर्च पेपर का कंक्लूजन क्या निकला है. वी प्रोवाइड अ through description and characterization of the different elements constituting compact instrument. We have designed, assembled and developed to assist forensic scientists to perform sample to profile DNA analysis in an automated and integrated fashion without the need for human intervention in the near future. To our best knowledge, the optical architecture in
is unique because it features a spot mirror instead of the usual dichro mirror to the split excitation beam as well as a compact DP-SSL. This allows cutting of a lower amount of blue-green dyes such as 5-carboxy fluorescein with emission maxima close to the cut on of the emission logos filter and makes the instrument virtually adapted to different combinations of the visible dyes generally used in STR typing kits with fewer constraints. ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास जो STR टाइपिंग के लिए जितनी भी फिंगर प्रिंटिंग वगैरह यूज़ होती है उनके अंदर सारे के सारे जो है वो ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो टाइम वेस्टिंग है वो कम होता है और अच्छे से और बहुत ही कम वक्त में एक कन्वीनियंट तरीके से काम हो जाता है सारे का सारा। ठीक है, ये थे हमारे पास। नेक्स्ट है रेफरेंसेस के किन किन बुक से ये जो है मटेरियल लिया गया है। दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर एंड थैंक यू सो मच।